Students, next question is about the comprehension questions from this text, and let's see what are those questions. The first question is why Sultan Ahmed Mosque is also known as Blue Mosque. Students, the writer is asking about the reason of calling Blue Mosque. राइटर हमसे ये पूछ रहा है कि हम ब्लू मास्क को ब्लू मास्क क्यों कहते हैं। आपने इस क्वेश्चन का आंसर पहले एक्सरसाइज के पहले पैराग्राफ में देखा कि हमें राइटर ने बताया कि वी कॉल ब्लू मास्क बिकॉज इट हैज ब्लू टाइल्स एंड विच आर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 ब्लू टाइल्स। ब्लू टाइल्स की वजह से हम ब्लू मास्क को ब्लू मास्क कहते हैं। सो वी कैन से दैट वी कॉल ब्लू मास्क बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स यूज्ड इन द इंटीरियर साइड ऑफ Blue Mosque. I hope I answered the question. Let's see the question number 2. Who was appointed as the architect of the mosque? Student, in this question, writer is asking about the architect, the person who designed this mosque. यानी कि इस मस्जिद की डिजाइनर के बारे में पूछ रहा है। तो हमने सेकंड पैराग्राफ में ये देखा कि सुल्तान अहमद was the person who appointed his royal architect, यानी कि उसका शाही और ख़ास मेहमान महमद आगा को उसने अपॉइंट किया था, जिसने 1616 में इस मस्जिद की तामीर को मुकम्मल किया। सो महमद आगा was the person who was appointed as an architect of this mosque. I hope I answered the question. Let's move to the question number 3. The question 3 is, why was a heavy iron chain hung at the entrance of the court? So student, we can answer this question in this way, that a heavy iron chain hung at the upper part of the court entrance on the western side. The purpose for hanging this chain was that whenever the Sultan had to enter the court, he had to lower his head to show reverence, humbleness and down to earth manner before the creator of the universe, the Almighty Allah. It means कि सुल्तान ने इस बात की हिदायत की थी कि आपने इंट्रेंस पे इस हैवी चेन को लगाना है, क्योंकि जब सुल्तान खुद इंटर होते मस्जिद में तो वो अपना सर झुका के उस चेन के नीचे से गुजर के जाते। इस चेन का लगाने का ये मकसद था कि वो अल्लाह के सामने अपनी बंदगी को जाहिर करना चाहते थे। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। Students, we are on the question number 4 of this exercise. Let's see what is the question. How does the interior of the mosque look? Student, इस क्वेश्चन में राइटर हमसे मस्जिद के इंटीरियर यानी अंदरूनी साख्त के बारे में पूछ रहा है कि वो कैसा था, यानी कि we have to describe the interior of the mosque. So we can answer this question in this way, that the interior of the mosque casts an enchanting spells on the visitor who admire the architectural design of the mosque by the heart. At the lower level, 50 tulip designs are carved on the more than 20,000 ceramic tiles made beautifully by hand. Colorful floral, fruit, cypress patterns are the sole attraction at the gallery level of the mosque. About 200 stained glass windows and expensive chandeliers enlighten the interior, whereas holy verses are incorporated in the decoration of the mosque. One of the most striking features of the mosque is its pulpit, or we can say the mihrab of the mosque. I hope I answered the question. Let's see what is the question number 5. Why do you think madrasa and hospice was part of the mosque? Students, इस क्वेश्चन में राइटर पूछ रहा है कि आपको क्यों लगता है कि मदरसा और हॉस्पिस जो वो उस मस्जिद के हिस्से थे वो क्यों थे, इसका क्या रीज़न है, इसके बिहाइंड क्या रीज़न था कि मदरसा और हॉस्पिस एक साथ थे। So we can say that madrasa was made for students. मदरसा स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने तालीम हासिल करनी थी, वो दीनी तालीम थी, जहाँ पे उन्हें दीनी तालीम दी जानी थी। Who came to madrasa? It means कि madrasa was made for students who came to madrasa to acquire Islamic knowledge, and hospice was made for destitute people who were needy. It means कि हॉस्पिस उन लोगों के लिए बनाया गया था जो गरीब लोग थे और उनकी मदद के लिए, यानी कि जो अपने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते थे, रहन सहन की जगह अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये सराय खाना यानी हॉस्पिस बनाया गया था। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन एक्सरसाइज. लेट्स सी व्हाट इज दैट क्वेश्चन. हु कंस्ट्रक्टेड मॉस्क सोफिया? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एक फेमस हाया सूफिया
मॉस्क के बारे में पूछा जा रहा है कि इस मस्जिद को किसने कंस्ट्रक्ट किया था. सो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वे दैट द हाया सूफिया वाज बिल्ट बाय अ चर्च बाय जस्टिनियन द ग्रेट. He was a Christian, Justinian the Great, between 532 and 537 AD. On May 29, 1453, the Sultan of Ottoman Empire, Mehmed II, conquered Constantinople and changed the church into the mosque and modified its structure. From onwards, it is known as Mosque Sufia. Later on, students, इस mosque को 1937 में एक म्यूज़ियम में चेंज कर दिया गया था, जो कि अब 2020 में दोबारा मस्जिद के उसको स्ट्रक्चर दे दिया गया, उसको दोबारा मस्जिद में बदल दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अब आज के दिन जुमा की नमाज भी तकरीबन 86 साल के बाद अदा की गई है. आई होप आई आंसर द क्वेश्चन. तो ये था क्वेश्चन आंसर का सेक्शन. चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं.